Yes, uncle. Yeah, okay. Greetings and in the precious name of our Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ. We are following Paul on his journey from Caesarea to Rome to be judged under Caesar. हम पौलुस का यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं कैसरिया से जो रोम की तरफ जा रहा है. And we know that now the story so far, we know that he has started from Caesarea and he was in Sidon where the centurion allowed him to meet with friends. And after that, they had a smooth sailing to Myra, and they waited there and they got another ship that came from Alexandria to take them to Rome. हमने देखा कि पौलुस अभी तक की कहानी ये थी कि जो पौलुस का जहाज सिदोन गया, वहां से जहाज आराम से मूरा स्थान पे पहुंचा और वहां पे दूसरे जहाज का वो इंतजार कर रहे हैं. And here we find that from Myra they went to Knidos, and in Knidos there were stormy conditions. So Paul had requested that they should wait for some time before they go ahead, because this was a dangerous period to sail. पौलुस ने उस कप्तान से आग्रह किया था कि नीदस में वो रुके क्योंकि इस समय बहुत ही भयानक समय था. Now, when we look at our own lives in relation to this journey that Paul is taking, we see even in our times when we have smooth sailing lives, but anytime there will be dangers that come our way. हम अपने अपने वास्तविक जीवन को देखें तो होता है कि कभी हमारा जीवन आराम से चल रहा और कभी अचानक से इस तरीके से आंधी आ जाता है. And at such periods of time, we find that the Holy Spirit gives us wisdom far beyond what we are capable of. उस समय हमें पवित्र आत्मा हमें ऐसी बुद्धि देता है जो जिसके हम योग्य नहीं होते. Now the centurion had listened to Paul and he had a very special liking for Paul because of what he had heard of him, and with his now his about a week's association with him, but yet he put more trust in the specialists, that is the boat captain and the ship owner. सूबेदार पौलुस की बातों को अच्छी तरह उसकी बातों को मानता है और उसको एक हफ्ते का लगाव भी था, लेकिन इस समय देखते हैं कि वो इस समय उस जहाज के स्वामी और कप्तान की बातों को मानता है ज्यादा. And here we come to the understanding that the wisdom of God is exceedingly more valuable than the knowledge of man. इधर ये एक चीज देखते हैं कि परमेश्वर का जो बुद्धि है वो मनुष्य के ज्ञान से बहुत ज्यादा बड़ा है. Because we come into situations in such a way that we find that the world tries to direct us in a certain way, saying that this is the right thing to do, or this is what experience has told us. But when we put these matters in front of the Lord directs us in his own way as to which way we can take. But the trouble is that we can use our own wisdom to override the Holy Spirit's prompting. हमें ऐसी परिस्थिति में जो संसार है वो कहता है कि मैंने इस तरीके से अनुभव किया, मैं अपने अनुभव से आपको ये रास्ता बताना चाहता हूँ, लेकिन हमें पवित्र आत्मा दूसरे रास्ता का दिशा देता है. हमारे बुद्धि के अनुसार है कि हम कौन सा रास्ता ले सकते हैं. हम पवित्र आत्मा के रास्ते को भी चढ़कर उसके विपरीत भी जा सकते हैं. And so here we find that the ship which was supposed to go straight, it was diverted by very strong winds, and with great difficulty they reached Crete and came under the shadow of the wind, and they went into a beautiful port of Fair Havens in Lasea. हम देखते हैं कि विपरीत हवाओं के वजह से वो जहाज को रोम जाना की जगह वो क्रेते नामक टापू में पहुंचता. वहां पे एक शुभ लंगर भारी नामक एक बंदरगाह है जो लासिया नामक जगह में स्थित है, वहां पे पहुंचता है. Now, if we see that
what had happened here was and they came to Fair Havens, and they said, now we will set sail for Rome. Actually, what I told you, what happened in Cnidus, actually happened here in Fair Havens, when Paul said it is dangerous period to travel. We have already been deflected by the wind, and let us wait here till winter is over. But the centurion listened to the captain. ये जो बातें भाई ने पहले बोली थी वो असली में ये शुभ लंघन बारी में नामक स्थान में हुआ था, जहाँ पे पौलुस ने चेतावनी दी थी, और सूबेदार ने पौलुस की चेतावनी के विरुद्ध जहाज के कप्तान और स्वामी की बात मानी थी. So they said, okay, let us go a little further, because this also is a dangerous place. It is a small harbor. Let us go to Phoenix. See, Phoenix is just about 40 kilometers away. We'll go and we'll dock the ship there, and we'll spend the winter in Phoenix. जहाज के कप्तान ने बोला कि यहाँ से हम फिनिक्स स्थान पे जाते हैं, जो कि 40 किलोमीटर दूर है. वहां पर हम अपने जहाज को वहां पे अपने शीतकालीन समय पे जहाज को रोकेंगे. So it would have taken them just 4 hours to reach. उन्हें ये सिर्फ 4 घंटे लगता अगर वो यात्रा करते तो. So they waited, and then they saw a very cool south wind blowing, and they thought that this is the right time to go, because the wind is in their favor, and so they set sail for Phoenix, keeping close to the island so that they can be protected from the wind. अभी दक्षिणी हवा चल रही थी जो कि जहाज के अनुकूल था, तो उन्होंने सोचा कि इसको वो तट के समीप जहाज को चलाकर वो हवा के दिशा से भी बचेंगे और जहाज को सुरक्षित फिनिक्स पे पहुंचा देंगे. Yeah. So here we see that they sailed out from there, and they would have reached in just 4 hours time. They would have been there. उन्होंने वहां से यात्रा प्रारंभ किया और वहां से 4 घंटे में वो उस जगह पहुंच जाते. Okay. We had come up to here last time. So here what we'll see from 14 and 15 of verse of chapter 27. 14 और 15 जो 27 आयत का हम पढ़ेंगे. परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती है. जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका थे. हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए. Yes. Now they had just started, and they were out of the mouth of the harbor where they were protected. And at that very moment, okay, see, this would have been their voyage, the dotted line. हम देखते हैं कि जो बिंदुओं की रेखा है जो मैप में, वो उनकी यात्रा होती. Okay. Now what happened, because of that strong wind, they were pushed down south, and with great difficulty they had come under Crete. दक्षिणी पश्चिम के हवा की वजह से उनका जो जहाज है वो जो दक्षिण की तरफ क्रेते स्थान पे पहुंचता है. Now after this has happened, the ship, you must remember that the ship is a very big ship. It is a wheat carrier. So they came under they were attacked by this Euroclydon, and this is the strong wind that came through. आपको याद होगा कि ये जहाज काफी बड़ा जहाज है जहाँ पे अन्य धान सामग्री ले जाती है. इस जहाज को यूरोक्लिन का जो इतनी जोर की हवा बही कि उसका दिशा बदल दिया. And when they came there, it meant violent agitation. That the name Euroclydon means violent agitation, and so the ship was caught in that. ये जो यूरोकुलिन है उसका मतलब है कि भयानक आंधी. Yes, and then when we see there that they could not control, the wind was too strong for them to control, because there is a rudder that the ship captain uses to deflect the ship. जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसको सामने ठहर ना सका, तो हम देखते हैं कि उसके आंधी पे वो उस पे जहाज नियंत्रित नहीं था. And because of that, they let her drive. See,
15, the end is, it says, they let her drive. अतः हमने उसे बहने दिया. Now, what is the meaning of let her drive? बहने दिए का क्या मतलब है? Now, see, this is the rudder which directs the ship right or left. ये जो चाकू है वो जहाज की दिशा को दिखाता है कि दाएं और बाएं मोड़ता है. Yeah. Now, when the winds are too strong and when you try to deflect the ship on one direction and the ship goes on to the other direction, there is a very good chance that this connection here between the tiller and the rudder, it can break. And if that happens, then the ship goes completely out of control. ये ऐसा हो सकता है कि समुद्र की हवा अगर विपरीत हो तो ये जो चाकू जिससे जुड़ा है वो टूट सकता और जहाज को फिर नियंत्रित करना मुश्किल होगा. Okay, so they just let the ship loose, and it is as if telling the ship, you choose your own way. उन्होंने जहाज को बहना दिया. इसका मतलब यह है कि जहाज को अपने दिशा में जाने दिया. Sometimes in life, isn't that what we do when we find that we are able to control our lives and we are able to take decisions, but sometimes the decision making becomes very terrible, and so we just sit quiet and do nothing. हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा सोच करेंगे, ऐसा निर्णय लेंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इसको ऐसे ही जाने दो. So that is what happened. And when we see the next thing that we see is a valuable rest is given to them. Means despite the storm, they came into a place which is under, there's a small, very tiny island, and that sheltered, the name of the island was Clauda. एक बहुमूल्य आराम उन्हें दिया गया. उन्हें एक स्थान जो क्लोदा के पास उन्हें लेके आए. Yeah. So here we see they made very slow progress up north as the arrow has gone, but the danger is there is, you see this Styrus. These storms are such that they blow the ship into that very dangerous area. We'll see a little about what Styrus is. ये जहाज को अगर हवा की दिशा इतनी विपरीत होने की वजह से वो टायरस पहुंचा सकता है, बहुत भयानक जगह है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, and we find that Styrus is a place. This is the Adriatic Sea, and there are two places: Styrus Lesser and Styrus Greater. ये स्टाइरिस जो जगह है वो समुद्र में एक बड़ा स्टाइरिस है और एक छोटा स्टाइरिस है. Okay, now what this means that there are two bodies of water in the Mediterranean Sea. The sailors on the Alexandrian grain ship, which carried Paul and Luke, they were terrified because they knew that they were doomed if they hit the here. Because here what happened, there were mountain ridges under the sea. इधर ये मेडिटेरेनियन समुद्र के दो भाग हैं. जब ये जहाज जा रहा था तो पौलुस और उसके साथ लोग डर गए क्योंकि उनको पता था कि इसके नीचे पानी के नीचे एक पहाड़ जैसा चीज है. Yeah, and they were so the ship would crash into that. The bottom would scrape against it, and holes would form, and the ships would sink. So this part was called the graveyard of the ships. ये भाग जो है इसको कब्रिस्तान कहा जाता था क्योंकि पत्थर जो है जहाज को क्षति पहुंचा सकता था, छेद कर सकता और उसमें फिर पानी भर के जहाज को काफी नुकसान होता. And grain ships were the largest, heaviest ships in that would sail, and so it was very likely that if they came into that area, they would sink. ये जो जहाज जिसमें अन्य सामग्री ले जाती है वहां पे ये जहाज बड़ी होती है और बड़े होने की वजह से इनमें क्षति होने का बहुत ही ज्यादा हो सकता है. If you can see this ridge here, if they hit against this and they are
they are doomed here. They have no place to go. They are finished. ये इस समुद्र के बीच में अगर उस पत्थर से वो जहाज क्षति होता है तो वो जहाज कहीं भी नहीं जा सकता, वो डूब जाएगा। And so the sailors were terrified in this place, because if they got stranded there would be a lot of water, but in the sea you cannot drink seawater, because if you drink seawater you will vomit everything out. So that is where the sailors saying is, water, water everywhere, but not a drop to drink. ये जो जहाज के कप्तान हैं, इसलिए वो इस जगह में जाने से डरते थे, क्योंकि अगर जहाज डूब जाता तो पानी हर जगह होता, अगर उस पानी को वो पी भी नहीं सकते, अगर पीते तो उल्टी हो जाती। पानी पानी तो हर जगह है, लेकिन पीने को कुछ भी नहीं। Yes, so that was a very terrible state to be in. ये एक बहुत ही भयानक स्थिति थी कि अगर ऐसे जहाज में होता। So now naturally they would want to carry out certain tasks, so that they've got a little bit of peace here. So at the time of peace they cannot relax. They have to work to secure the future. इस समय वो शांति के माहौल में कुछ अभी उन्हें कुछ काम करने हैं जो करने हैं। Yeah, and this Styrus you can see here in this portion, just south of Malta, and there is a big area which is this graveyard of the Mediterranean and the Aegean Sea. ये जो सिट्रियस जो स्थान है वो जो माल्टा के दक्षिण में है, उससे पास में एक ये जो कब्रिस्तान वाला इलाका है, जो जहाज के लिए कब्रिस्तान कहलाया जाता है। So they carried out certain vital operations, certain vital tasks that they have to do. उन्होंने जीवनदायी जरूरतमंद कुछ कार्य को किया। And here what they did was, if you can read 16 and the beginning part of 17, Justin. तब कोदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई में डोंगी की वश में कर सके। फिर मलाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुर्तिस के चोरवालों पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। Okay, so now here what we see is that you can imagine the ship is being driven by the wind. Here at least there is a little bit of calm, and this is the time when they could do certain things which were required to do. यहाँ पे हवाएं थोड़ी थमी हुई हैं, इसलिए इस समय कुछ चीजें जो जरूरतमंद और जीवनदायी चीजें हैं उन्हें करनी थी। In our life also, when we are passing through difficulties, when we get a little bit of respite in between, we always try to take corrective action, fearing lest if something worse happens to us along the way. हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब कठिनाई के समय में थोड़ा विश्राम मिलता है, तो उसी समय हम उन चीजों को करते हैं कि ऐसे कार्य को करते हैं जो आने वाले समय में आने वाली परिस्थितियों में मदद करेगी। And because we realize that at such times we have been a little careless. हमें ये ज्ञात होता है कि उस समय हम कुछ ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, हम ख्याल नहीं रखते। For example, in this case, they took up the lifeboat. You see, it is written here in Clauda, had much work to come by the boat which they had taken up. They took up the boat. Which boat? This is the lifeboat. उन्होंने एक जहाज को निकाल दिया। ऐसे इधर कौन सा जहाज है वो जो जीवन बचाने वाला नाव को उसे निकाल दिया। Yes. So what happens? See, this is greed. You see, the lifeboat is heavy. ये लालच है कि ये जो जीवन बचाने वाला नाव है वो काफी भारी है। Now the ship owner wants maximum profit. So if they remove the lifeboat, they can put in a lot of grain extra in the ship. इधर जो जहाज का कप्तान है वो थोड़ा लालची हो गया। वो सोचता है कि अगर मैं ये जीवन बचाने वाली नाव को निकाल देता हूं तो अनेक धातु सामग्री को
और अपने जहाज में लाद सकता हूँ। So what they do, they keep it in the water and they tie it to the ship, and as the ship goes, the lifeboat comes behind it. इधर क्या होता है, ये जो छोटी नाव है उसको जहाज से बांधा जाता है और जैसे जहाज चलता है उसके पीछे ये छोटी नाव भी चलती है। Okay, so now we see how they do it. See, this is the lifeboat which is attached to the big ship, and as it goes through the water, this is just dragged along. इसको इधर भाई दिखाना चाहते हैं कि ये छोटी सी नाव जो जीवन बचाने वाली नाव है, जो बड़े जहाज से बांधा जाता है और जैसे जहाज चल रहा है वैसे ही वो ये भी चलता है। But now the thing is that now they are in danger, and if that line breaks, first of all, that lifeboat will be lost. Secondly, they cannot enter this lifeboat with the boat in such heavy seas. इधर इस समय क्या हो रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति में वो जो रस्सी है वो टूट सकती है, या ऐसी परिस्थिति में वो इस जहाज पे वो चढ़ नहीं सकते। Yeah. So this is a life-saving thing. Now, in our lives also, we sometimes become careless in our life, and we don't pay attention to the warning signals that the Bible gives us. हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आती हैं जब हम ख्याल नहीं रखते, जो काफी समय हमें वचन सचेत करता है, उस पे हम उसका ख्याल नहीं रखते। We tend to overlook that, in which we say, like for example, when the proverb says that when you go to a king's palace for a feast, put a knife to your throat. That means be careful in what you eat. We don't do that. We see good food and we go ahead and eat as much as we can. जब वचन जिस तरीके से बोलता है नीति वचन में कि जब हम राजाओं के यहाँ जाएं तो हम बड़े ख्याल से खाना खाएं, लेकिन हम उस बात को दखल अंदाज कर देते हैं और हम जितना हो सके उतना खाते हैं। And then later on we fall in trouble because we may get invited to many such parties and many friends' houses and all that. And at home, maybe we are able to control our diet. But once we go out, this is one of the examples in which what we do is we lose control of our life. ये एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे हमें बहुत सारे पार्टी में बुलाया जाता है, लेकिन हमारा खाना का नियंत्रण नहीं होता। हम घर में तो नियंत्रण होता है, लेकिन बाहर नियंत्रण नहीं होता है। Yeah. The second thing they did was they undergirded the ship. दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे से जहाज को बांधा। Yes. Now in this, what they do is, if this is the ship, see these red lines, they circle the ship from below and they tie it on top in many ways, so that it's like a parcel that the waves cannot break, because this ship is made of wooden planks. इधर जहाज को ऊपर से नीचे तक रस्सी को बांधा जाता है, जिस तरीके से किसी उपहार को बांधा जाता है उसी तरीके से इसको बांधा, जिस तरीके से जो जहाज की जो लकड़ियां हैं जिसे वो टूटे नहीं। And this requires relatively calm weather to do, because they have to put the rope from here across and let the rope go down, and then when it comes to a certain way they'll tie it up, then the second rope is put. So this is a very strenuous operation, and all the deckhands are involved in it. ये जो रस्सियों को बांधने के लिए, ऊपर से नीचे बांधने के लिए, बहुत ही कठिन कार्य है। इस कार्य को बहुत ही ऐसा मौसम चाहिए जो शांत हो। So in this operation, I'm sure even the prisoners must have been let loose to help them to undergird the ship. इस समय जो बंदी है उन्हें भी छोड़ दिया गया हो कि जिसे इस रस्सी को वो बांध सके। So then the next thing that we see is that these are the tasks already done. They took up the lifeboat and undergirded the ship. Now they are going to brace for danger. Means what is? I'll explain to you what is bracing. अभी तक उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जीवन के नाव को छोड़ दिया और उसके बाद जहाज को फिर से ऊपर से नीचे तक बांधा है। ये खतरे के पास ब्रीसिंग
Bracing. Okay. Okay. I'll explain it. Now, for example, if you are traveling in a bus, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आप बस में यात्रा कर रहे हो, and see, most of us, they love to look out of the window. Those who are towards the front, they like to look out from the where the driver is driving. And when you see another truck approaching you, you tend to involuntarily you put your hands forward and take hold of the bar of the seat in front of you. हम में से बहुत सारे लोग खिड़की के पास बैठते हैं और देखते हैं कि जो ड्राइवर है किस तरीके से चला रहा है। अगर आपको लगता है कि वो आने सामने कोई खतरा है, तो हम अपना हाथ आगे वाली सीट पे रख देते हैं बचने के लिए। And that is how we say, okay, if we collide, then at least we'll be able to keep away from this seat. अगर हमारा इस तरीके से टकराव भी होता है, तो हम इस तरीके से अपने आप को समुद्र से बचा पाएंगे। Yeah. So now the storm is worsening. That is why we need to brace ourselves. Means we need to prepare for a worse situation. अभी ये जो आंधी है उसका उफान बढ़ रहा है, तो क्या करना है कि हमें उस खतरे की तैयारी करनी है। Yeah, so because now they are proceeding towards this further east, and as they are proceeding, see, if you see here, it's a zigzag way. वो जांच उनको अभी पूर्वी तरफ जाना है। अभी अगर आप रास्ता देखोगे तो उल्टा पुल्टा रास्ता है। Now see, if you see the arrow, it is pointing upwards. What the ship captain is trying to do, he is trying to meet this this blue line, the dotted line, so that they can go back to their normal voyage. But the wind is so strong that it keeps driving them downwards. इधर जांच का कप्तान क्या करना चाहता है कि वो नीली रेखांकित लाइनें हैं उसकी तरफ जाना चाहता है, लेकिन हवा का जोर इतनी जोर की है कि वो जहाज को दक्षिण की तरफ मोड़ रहा है। Now this again, they have come out of the calm weather, and again they are in danger. Remember that it's a sailing ship. It is driven by the wind, and also it is driven by the sea currents which are underneath. ये अभी वो शांत जगह से शांत मौसम से अभी फिर से उनका मौसम विपरीत हो गया है। ये आपको याद रखना है कि ये जहाज जो है हवा से चलती है, और जो समुद्र के अंदर जो करंट है उससे भी चलती है। So what is the best way to they want to slow the ship down. So what they do is they strake the sail. The next task that they do is they strake the sail. That means they pull down the sail, they remove the sail. दूसरी चीज उन्होंने जो जीवनदायी कार्य को किया कि उन्होंने ये जो हवा की जो पर्दे हैं उसको हटा दिया। So because when they remove the sail, what happens is that the wind doesn't blow the ship, and then they have to let go the rudder and let it drive on its own, because they can't control it anymore. जहाज के पर्दों को इसलिए निकाल दिया कि वो जो हवा अब जहाज को नियंत्रित ना करे। अब जो चक्कू चलाने वाला है उनको भी हटा दिया कि अब जहाज को अपने आप चलने दे। And here we see, that's why we see instead of going further north, the ship is again going south. उत्तर की ओर जाने की वजह अब जहाज हवा की वजह से वो दक्षिण की ओर जा रहा है। So they do two things. They strake the sail, and at the same time they lower what is called as a sea anchor. उसके बाद उन्होंने जो जहाज को जो चलाता है जो उस चीज को भी उसने नीचा किया। Okay, so straking the sail is like this. See, this is the sail. They are bringing the sail down so that it doesn't get carried by the wind. इधर जो जहाज के पर्दों को नीचे किया गया जिस तरीके से दिखाया गया। And after that, the second thing is they lighten the ship. That means they throw out unnecessary things. दूसरी चीज उन्होंने जहाज को हल्का किया, जो भी चीजें जरूरतमंद नहीं थी उन चीजों को फेंक दिया। No, but before that, this is the sea anchor. The sea anchor is like a parachute. They put in the sea
so that as the ship is going this way, so then when they put the sea anchor there, it does not, it is like a parachute. It makes the ship go slower. ये जो जहाज को नीचे से जो बांधने वाला चीज है उसको हम हवा के गुब्बारे के समान कह सकते हैं, जिससे कि अगर वो जहाज को अगर हवा रोक सके. Yeah. So this is how uh, they do this, and then they try to maneuver the ship further. ये उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने चाहा कि वो जहाज को आगे बढ़ने दे. So now they've accomplished 4 tasks, and what happens to the ship? The ship is now drawing closer to Styris, and so now they are in from moderate danger, mild danger, moderate danger. Now there is exceeding danger. उन्होंने ये 4 चीजें की. अभी उसके बाद क्या हुआ कि अभी जहाज के साथ क्या हो रहा है कि वो भयानक स्थिति सबके करीब है. And so the tempest was terrible. If you read verses 17, 18 and 19, Justin. जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सारा सामान भी फेंक दिया. Okay, so now what they have done is that they carried out the final tasks. One is lightening the ship, and the second is casting out the tackle. Let us see what this means. Lightening the ship means that they throw away part of the grain that it is carrying to make the ship lighter. उन्होंने पहली चीज जहाज को हल्का करने के लिए क्या किया, जो जहाज का सारा सामान है उसे फेंक दिया. And that makes it float higher, so that even if they reach Sardis, they will not hit the underlying mountains. इसकी वजह से जहाज ऊंचा हो गया. अगर साइप्रस जगह पे भी पहुंचते तो वो ऊंचा होने की वजह से जो समुद्र के नीचे जो पहाड़ है उससे जहाज टकराता नहीं. There's a chance, but it may, but there is it's a better chance for missing that. And the second thing is they cast out the tackling. The end part of 19, what does it say at the end, Justin? तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सारा सामान भी फेंक दिया. Now the tackling are the essential. They are heavy pulleys which hold the ship, and there are heavy equipments of the ship like this. These are very heavy equipment on which the sails are attached. Now, to save life, it's a very expensive equipment, but they have to throw it overboard. ये जो जहाज का जो सारा सामान है वो बहुत ही भारी सामान होता है, जिससे जहाज को रोका भी जाता है और ये बहुत कीमती सामान होता है, लेकिन अपने जीवन बचाने के लिए उन्हें ये सामान को भी समुद्र में फेंकना पड़ा. Yeah, and this also is another tackling thing which is extremely heavy. As you can see, they remove the nuts and bolts and they lift it over and throw it into the sea. And in such a situation, one thing is certain: when you see that someone is throwing the tackle of the ship into the sea, it means that there is no hope left that that ship will ever sail again. उन्होंने उस चीज को भी बांध दिया, जिससे जो पर्दे बांधे जाते थे उन चीजों का जो यंत्र है, बड़े भारी यंत्रों को भी फेंक दिया. इसका मतलब, इन चीजों को फेंकने का मतलब यह है कि फिर से दोबारा जहाज उस हवा से नहीं चल सकता. That is what happens in life also, isn't it? When we face danger, we have everyone collects reserve money, but if that is still not enough, COVID situation has wiped out so many people financially because they took out even what is the reserve money with them and they had to spend it to save a life. हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब खतरे आता है तो जब हमने जो पैसे कुंजी जो बचाई हुई है वो भी सब कुछ खर्च हो जाता है. अगर आज की परिस्थिति में देखा जाए तो कोविड में बहुत सारे लोगों ने जब अपने जीवन बचाने के लिए जो कुछ उनके पास था उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया. So here, when you remove the tackling of the ship, you cannot bring the ship to the shore because
there is nothing to hold the ship to the shore from there's no strong point on the ship left that you can tie it to the shore. जहाज को जब ये अंतरों को छोड़ फेंक दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी तरीके से जहाज को तट पे नहीं ला सकते, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो पर्दे बांध सकते हैं. And so we can understand that this is practically, for the ship's sake, it is a hopeless situation. हम प्रायोगिक जीवन में देखें तो ये जहाज के लिए एक निराश, कहीं जिसमें आशा नहीं है, वैसी स्थिति है. And then we see what happens further. When it goes even further, we see that all hope now is lost because the tackling is gone, the sail is down, everything is even the wheat is depleted, because if you don't deliver the wheat, you won't earn. The ship owner does not earn, but they're not looking at money now, they are looking at life. इधर सारी आशाएं खो गई. हम देखते हैं कि उन्होंने जो जिससे जहाज बांधा जाता है उसको फेंक दिया, जो दान सामग्री है उसको फेंक दिया. दान सामग्री से उसे फायदा होना चाहिए था, लेकिन अभी फायदे को ना देख कर अपना जीवन बचाने की सोच रहे हैं. Yeah, so now when all hope is lost, they find that it is very difficult to manage the ship. And if you read 20 and 21, Justin. जब हमारी सारी आशाएं खो जाती हैं तो उस जहाज को चलाना मुश्किल होता है. 20 और 21 आयत में लिखा, जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बहुत बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही. जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात सुनकर क्रेते से ना जहाज खोलते, ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते. Okay. Now, here, now most of them were either semi-conscious due to lack of food, hardly any water, and continuous vomiting. This is what happens to the crew. इधर जो उनमें से बहुतायत लोग अधमरे स्थिति में थे, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था और पानी नहीं पिया था और उल्टियां बार-बार कर रहे थे. And then they go mad with terror. They don't know what to do. They'll be like madmen running about without uncontrollable. वो आंधी की वजह से पागल हो गए थे, जो ऐसा लग रहा था उन्हें डर था और नियंत्रित नहीं कर पाए थे. Yeah, this is Paul is talking about a 14-day long storm. पौलुस इधर 14 दिन लंबी आंधी के बारे में बता रहा है. I can give you an experience of 48 hours in a cyclonic condition, in which the ship was rolling and pitching so much that no cooking could take place. We had to convert the lower you go in the ship, the more stable it is. So we had to open, it was a kind of a rec room. We had to make it a hospital. People were lying on the floor with IV fluids. भाई अपने अनुभव से कहते हैं कि उन्हें 48 घंटे ऐसी स्थिति में जाना पड़ा जहां जहाज को बड़ी आंधी से गूंजना पड़ा. उन्हें कोई लोगों ने कुछ खाया नहीं. जिस इस समय क्या होता है कि जो जहाज का जो निचली भाग होता है वो सबसे सुरक्षित स्थान होता है. इन भाई ने उस स्थान को एक हॉस्पिटल बना दिया था और काफी लोग वहां पे अपना उपचार कर रहे थे. And it was one of the worst things that I have seen in my life, in which people were vomiting. There's no question of cleaning up that vomit, and it was a carpeted flow. And it was miserable to see them, and especially we had some very young mess boys who had never been to sea, and they were in such a horrible state. भाई ने इसकी वेदनीय स्थिति देखी कि जहाँ पे सारे लोग उल्टी कर रहे हैं और भाई के साथ कुछ नवयुवक लोग थे जो कि भोजन बनाने का कार्य करते थे. उन्होंने कभी भी जहाज पे यात्रा नहीं की थी. वो भी लोग इस ऐसी भयानक स्थिति से जा रहे थे. And one of our assistant cooks, he went up or to the upper floor because we had to
close all the doors, and those doors are latched very heavily. He was trying to open one of the doors to jump into the sea. We had lost all control. इनके साथ जो सह बावर्ची था उसने चाहा कि वो ऊपर जाए, और ये जो उधर के जो दरवाजे थे वो जोर की बंद थे, तो उसका जो मन है वो आपा खो दिया था. And the only way to deal with a situation like this is to give people some heavy duties to do. Only then they could, the mind can be diverted a bit. इस समय जरूरी चीज ये होना चाहिए कि लोगों को बहुत कठिन कार्य दिए जाए, तभी उनका मन अलग हो सकता है. I think that is what kept us, because the captain and the centurion and Paul and his men, they must have been, out of personal experience, I had so much on my hand to do that I could not think of getting seasick. It was something that people's life depend on you. And so you are completely engrossed in that. And then the rolling and pitching of the ship and the dangers that are outside, which we cannot see inside the room, that we just forget about and just live for the moment. That is the way that you can survive, only way to survive. इस समय भाई अपने अनुभव से बताना चाहते हैं कि भाई ने अपने आप को अब नीचे गिरने नहीं दिया. इस समय अपने आप को बहुत अपने आप को हियाब बांधा, और कठिन परिश्रम से, जिस तरीके से पौलुस और अनेक से उधर के जो जहाज के सहकर्मी थे, जिस तरीके से कठिन परिश्रम कर रहे थे कि उन्होंने उस चीज को अपना आपा खोने नहीं दिया. And so here we see the captain, of course, must have been very busy to take decisions, and his sailors and everyone. The centurion also must be planning what to do with the group of prisoners that he had. Paul, Luke, and Aristarchus must be busy praying. And these are the things that kept them sane, kept them from going mad. And if you ask Paul, how did you manage? सूबेदार अपने उधर के जो बंदी लोगों के साथ उनको किस तरीके से व्यस्त रखे, और जो कप्तान है, जो जहाज का सामी है, वो उधर जहाज के जो सहकर्मियों के किस तरीके से व्यस्त रखे, और पौलुस और अरिस्तर्खुस प्रार्थना में व्यस्त करे. तो हम पौलुस से पूछना चाह रहे हैं कि आप इस समय इस परिस्थिति को आपने किस तरीके से झेला? And they would say that, Paul would say, I remembered my time in Lystra when I was in prison and they put us in stocks, Silas and myself, and we started singing. And then the earthquake came and we got released. So we always had that hope that our Lord is there with us. We occupy yourself with things of the Lord, and all these things will slowly disappear. पौलुस कहेगा कि मेरे को लुस्त्रा में मेरे को बंदी बनाया गया, तब हमने अपने सह विश्वासी के साथ हमने गाना गाया, तब एक भूकंप आया और परमेश्वर ने उस दर से बचा लिया. तो पौलुस को हमेशा आशा थी कि कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उसके साथ है और उसको बचा लेगा. And so we had deployed the other crew members to just lift the patients from one side to the other, to keep them occupied. To do that, go and get water for them, and also try to clean up whatever you can. So they kept occupied. You see, so this is important in our storms in life. The best thing that we can do is just pray, hold hands. If you are in a group, hold hands together and pray. That's why even in difficult situations, we have chain prayers, so that we are occupied in prayer. It is not only to beseech the Lord, because the Lord knows our situation, but it is to get together, to huddle together, and to put all your focus in
what the Lord can do for you. भाई अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति हुई तो उन्होंने अपने जांच के सहकर्मियों से बोला कि जितनी लोगों की मदद कर सकते करें, वो इस तरीके लोगों को इस एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं, अगर उल्टी की है तो उसको साफ करने की मदद करें, जिस तरीके से वो मदद कर सकते हैं करें, जिस तरीके से उनका मन किसी काम में लगे रहे। इसी तरीके से हमें ऐसी जब परिस्थितियां आती है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक साथ कड़ी में जुड़कर प्रार्थना करें कि वही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज होगी कि हमारा मन भी व्यस्त रहेगा और हम प्रभु से उस समय दिशा भी पूछ पाएंगे। And on top of that, there was a walkie-talkie which we had to go on an emergency channel, which is channel 16, in which other ships could call us because there were only 3 or 4 doctors in that Bombay High area, and they used to consult as to what medication is to be given. So that was a time in which time was occupied so much that the danger we were not able to this thing, and that was a time in which we were at sea in that cyclonic situation for a maximum of 46 hours. भाई अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताते हैं, भाई जहाज में थे, उन्हें एक दूरभाष यंत्र दिया गया था जिससे वो बातचीत कर सकते थे दूसरे जहाज से कि किस तरीके से दूसरे लोगों को उपचार दिया जाए। तो इस तरीके से वो हमेशा व्यस्त रहे। हम देखते हैं कि भाई कहते हैं कि ये जो बड़ी जो आंधी आई उसका जो समय था वो 46 घंटे था। And so we can remember this incident similar to Moses. They had reached the end. It's like Moses when he was confronting the Red Sea with the armies of Egypt chasing after them. He had nowhere to go. At that time, he stood there, and what did he say? He told his people, "Stand still and see the glory of God." इसी चीज को इसी परिस्थिति को हम मूसा से समानता कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब वो लाल समुद्र के करीब था और मिस्री लोग उसका पीछा कर रहे थे तो मूसा ने उधर के लोगों से कहा कि आप शांत रहें और परमेश्वर की महिमा को देखें। Yes, and then we see that Paul's encouragement comes in now. यहाँ पे पॉल अपना उत्तेजना दूसरे को उत्तेजित करता है। Paul admonishes the people that although they did not listen to him at Fair Haven, yet he encourages them 3 things. पौलुस कहता है कि तुमने मेरी बात क्रेता स्थान पे तो नहीं मानी, लेकिन मैं तुम्हें ढांढस बांधने के लिए 3 बातों को बताता हूँ। Okay, can you read from 21 and 22, Justin? और एक लोगों चाहिए था कि तुम मेरी बात सुनकर क्रेता से ना जांच खोलते, ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जांच की। Yes, so his encouragement is like this. He says that although you did not listen to me in Fair Heavens, but yet please listen to me now. 3 things. You should listen to me. Secondly, be encouraged. And thirdly, be sure of what I am saying. तुमने मेरी बातों को शुभ लंगर बारी बात में तो नहीं माना, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि आप इन 3 चीजों को बात मानो। मेरी बातों को सुनो, दूसरी चीज ढाढ़स बांधो, और तीसरी चीज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि कोई मरेगा नहीं। Yes. So here we see the most this thing that Paul is trying to tell them. But we look at this and say, is Paul just trying to encourage them? Because what basis does he have to be so sure that nothing is going to happen? क्या पौल सिर्फ उन्हें आश्वासन देना चाहता है या उत्तेजन करना है चाहता है? क्या आधार है कि पौलुस उन्हें आश्वासन दे रहा है? And so we see in okay, no. I'll just go back to this. One sec.
Yes. Okay. Now we see that what he had told these people on board was because of God's sure assurance. ये जहाज पर इस चीज को इसलिए बोल पाया क्योंकि वो परमेश्वर परमेश्वर के आश्वासन के साथ बोल पाया. And here Paul reveals the source of his assurance. He says, no, I'm not giving you false promises. I'm not giving you sukha promises. This is a sure assurance. And if you read 23 and 24, you'll come to know. 23 और 24 आयत में पौलुस कहता है कि मैं इन आश्वासन को ऐसे नहीं दे रहा हूँ. इन आश्वासन ये प्रेरित परमेश्वर के द्वारा है. 23 और 24 आयत, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, उसकी स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है. देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है. Yeah. So here we see that again he acknowledges that God to whom he belongs and worships, and then he also gives this is what a great testimony he has given about his Lord. First, he acknowledges, I belong to a Lord who is a faithful God. किस तरीके से पौलुस उस बात को प्रचार करता है कि जो परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ. Last sentence, can you repeat it? Because he is a faithful God. वो विश्वास योग्य ईश्वर है. Yeah. And then he says, he has sent a messenger to me, and in times of trouble like this. उसने मेरे को एक सरदूत जो भेजा है, जिससे ऐसे समय में जो मुझसे बातें करे. So in this terrible situations, in this storm, he has sent an angel. Can anyone come into a ship in a storm like this? ऐसी भयानक स्थिति में कोई जहाज में कोई आ सकता है. And it is, we must be assured that in the worst situation that we face, God sends his help to us. And because why does he do that? Because he is our master and he is the master of the universe. हमें ये आश्वासन होना चाहिए कि हमारी स्थिति कितनी भी भयानक हो, उस स्थिति में भी परमेश्वर हमें कोई सहायक भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर इस जगत का प्रभु है. And he is a caring, he is a loving, and he is an unforsaking God. वो ख्याल रखने वाला परमेश्वर है. वो कभी हमें भूलने नहीं देने वाला परमेश्वर है. He is omniscient, means he knows everything. He knows your situation. He knows in any situation, in any corner of the universe. वो सर्वज्ञानी है. वो सबकी परिस्थितियों को जानता है. वो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी परिस्थितियों को जानता है. And he is an omnipotent God. You know, where he could have told them that they were the disciples were caught in a storm. The Lord Jesus Christ was sleeping in the lower quarter of the ship, and he came up and he just told the wind to stop. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. जब चेले उस जहाज पे जा रहे थे, जब आंधी आई, तब जब यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उस हवा को एक शब्द से रोक दिया. And that is the great testimony that Paul had with the people on the ship. And then God had reassured Paul. ये बहुत बड़ी गवाही जो पौलुस उस जहाज की यात्रा में दिया है, जहां पे परमेश्वर ने फिर से पौलुस को आश्वासन दिया. And we see in verse Acts 23 and 11, God had already told him, be of good cheer, Paul, for thou hast testified of me in Jerusalem, but you must also bear witness to me in Rome. He had already told him that, but here again God is reminding him the very same thing. उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढांढस बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी. इसी को हम देखते हैं 27 आयत में. पुनर्आश्वासन पौलुस को फिर से 27वीं आयत में देता है, 27वीं अध्याय में देता है. Yeah, because God knows that we are a forgetful people. God knows that we require reassurance. Although you promise someone something, in times of trouble, you require to be reassured, and God has done exactly that.
पौलुस परमेश्वर को हम ज्ञात रहता है कि हम बातों को भूल जाता है, इसलिए वो पुनर्आश्वासन देता है कि हम उस चीज को याद रखें। And God also reminded Paul that not only he will be saved, but because of him, the people on the ship will be saved. परमेश्वर उसे आश्वासन देता है कि ना केवल तू बचेगा, तेरी वजह से जो जहाज पे यात्रा करते हैं उन वो भी बचेंगे। And that's why he says in end of 24, he says, God has granted you all those who sail with you. All those he has granted that they also will be saved with you. परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हम देखते हैं कि जो भी उसके साथ यात्रा कर रहे हैं वो उन सब की जान बचेगी। And this is exactly the same thing that happened in Joseph's time in Genesis 39 and verse 5. And it came to pass from that time that he had made him overseer of the house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian houses for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had done in the house and in the field. यही चीज यूसुफ के जीवन में देखते हैं। उत्पत्ति 39:5 जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। So it's such a great position we are in, that when we belong to the Lord, not only are we safe, but the people around us also are safe. हमारे लिए इतना बड़ा स्थान परमेश्वर ने दिया है कि जब हम जिस स्थान पे रहते हैं, हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उस आसपास के जो लोग हैं वो भी बचाए जाते हैं। And we see in Revelations also that the unbelievers are safe so long as the church is still in the world. हम प्रकाशित वाक्य इस चीज को पढ़ते हैं कि अविश्वासी इस दुनिया में जब तक सुरक्षित है, जब तक इस कलीसिया संसार में सुरक्षित है। And once the church is caught up, the great tribulation starts. एक समय जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब ये कठिन समय जो परेशानी का समय आने वाला है। And we stop here because our time is gone. And thank you very much for patient hearing, and Justin for a lovely translation. If the Lord tarries, we'll meet again next week at the same time. Good night, and be safe and be healthy. आप मेरा समय समाप्त होता है। अगर परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले समय, अगले वाले हफ्ते में इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों को धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद, और आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। धन्यवाद। आई विल रिक्वेस्ट नवीन भैया to close this meeting with prayer. Our Father in heaven,